Sat Shri Akal ji ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. So today is 12th October and let's do the weekly analysis for the next week. So moving on to the NASDAQ, starting from the monthly time frame, right? So this is a time frame from where we start every time, right? So this is the time frame which tells you the whole story and the narrative behind the price and time algorithm, right? So starting with the monthly time frame ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ we have this low to this high. So like ਮੈਂ consider ਕਰ ਰਿਹਾ we have that high, right? Which is we don't have that high, right? So same as on the ES, we have dealing range of monthly time frame from this low to this high, right? Marking out our PD areas, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ market equilibrium ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ, so that is correction of 14%. That is not gonna happen, right? So let's mark out our PD areas that is above the equilibrium, right? Because we are not looking for the monthly time frame. जब आप monthly time frame की wait करेंगे तो no doubt market पता नहीं कब तक equilibrium तक आए or its new high, right? So let's do with the monthly time frame. Let me remove this. Same as on the years. Yeah. So MNQ the which we have this internal range liquidity on the monthly time frame. ਹੁਣ ਮੈਂ monthly time frame क्यों consider कर रहे हैं? We have huge news that we got 100% tariffs on China and the market dumped 4% on Friday, and that is the historical dump of this market, right? So मैं ये देख रहा कि market at least इस monthly fair value gap ਨੂੰ tap करे in order to go higher. Why so, right? We have ton amount of liquidity above this the PD array, right? We साढ़े कोल trend line liquidity या 3 equal lows पे अपने को last 3 months थे, right? July, August, September, last 3 months थे साढ़े कोल equal lows पे या same as on the ES. We have previous 3 months low that has not been taken yet, right? That will act as inducement and the smart money will buy from the monthly fair value gap. This is what I'm looking into the market. So if I consider monthly time frame, then I'm waiting के market is monthly fair value gap tap करें, and then I will plan my buy position, right? So that is for the monthly PD arrays and monthly profile. Yeah, that is for the monthly profile, right? Moving on to the weekly time frame. So the time is fractal. You have to check each and every time frame in order to mark your profiles and your PDIs, right? Start with the monthly time weekly time frame. Weekly time frame ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦਾ PDR ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ. Secondly, we have these 3 equal lows liquidity that is perfectly aligning with our PDR. So this will act as inducement and we can see a turtle soup happening over here, right? So turtle soup भी बन सकता है. Let's wait for these PDRs. मैं personally ये तो buy करूँगा जब market आई. Let's see, क्योंकि बहुत ज़्यादा 14% किन्ने 8% correction is huge. So for that we need huge news, right? Poverty news चाहिए सर. So moving on to the weekly time frame. Weekly time frame they accordingly we have this weekly profile, right? Weekly profile the according market has already tapped at equilibrium, जो कि मैं 22 सितंबर तो कह रहा सी कि market इस equilibrium तक आएगी if it wanna go higher, no matter what. और if the news होए भावें कोई भी news होए ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ तक लैके आएगी, जो कि मैं 22 सितंबर की मेरी वीकली एनालिसिस जाके देख लियो. ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਇਟਸ ਵੀਕਲੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੋ ਹਾਇਰ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਸਿੰਪਲੀ, ਰਾਈਟ? So we have tapped the weekly internal range liquidity on NQ. Same as on the ES, we are standing at the 0.71, that is the optimal trade entry on MES. the market ने अपना order block tap कर देता है, right, on weekly time frame, and it's going higher from here, right? So we just have one PDRA below the equilibrium जो market ने tap करता है, and आज market I think 390 points I think open हुई सी gap up, if I'm not wrong, yeah, 350 points market gap up opening हुई.
The reason for that gap up is this thing. Don't worry about China, it will be fine. Highly respected President Xi just had a bad moment. He doesn't want depression for his country, and neither do I. The USA wants to help China, not hurt it. President DJT, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। ਸੋ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ, ਲੋਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ that got suicide in previous 2 days, right? And then we got a beautiful market opening of cap up 350 point, 1.46% index gap up open hona. This is not a majak, there is something cooking behind it, right? So this is the weekly time frame, right? Weekly time frame ਦੇ ਉੱਪਰ market ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਂਜ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਟੈਪ ਕਰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਜੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬੁਲਿਸ਼ ਟੂ ਬਾਈ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਰੇਂਜ। आई वॉन्ट कि मार्केट एटलीस्ट इस मंथली फेयर वैल्यू गैप तक आए। इफ़ आई वांट गो, इफ़ आई वांट टू बाय द मार्केट, मैं इतों इंटरस्टिड नहीं है बाइंग दे विच। अगेन आई एम नॉट इंटरस्टिड, मेरे पोर्टफोलियो दे विच मैं इतों बाइंग इंटरस्टिड नहीं। आई वॉन्ट कि मार्केट वीकली एक मंथ के फेयर वैल्यू गैप तक रिट्रेस बैक इन करे, एंड माई बाइंग जोन इज़ 22,600, राइट। सो आई वॉन्ट कि मार्केट तक आए एंड देन आई विल बाय द मार्केट्स। सो बेसिकली मार्केट ने इंटरनल टैप की है, वी आर गोइंग हायर। मार्केट दे विच एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है, एंड 1 नवंबर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर द 1 ਨਵੰਬਰ, ਰਾਈਟ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਰਾਈਟ। ਡੇਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਫ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਫ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਔਨ ਦ ES ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਫ ਰਿਕਵਰੀ ਡਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਰ ਦ PDRAs from where I am looking to short or buy the market, right now। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਇਕਵਿਲੀਬਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਅਰਿਸ਼ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ, let's go to 6 hour। 6 hour the upper we have this beautiful fair value gaps, right, and on 4 hour as well, and on 1 hour we can refine them over here, right। 1 hour the upper je tusi dekho market ne already CASD देती है over here, right, and it is going higher and higher, right। so je ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ market will go higher, ਤਾਂ it should have to come down and fill this gap in order to go higher। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਡੇ ਓਪਨ ਗੈਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇਫ ਇਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦਿਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੇਂਜ ਲਿਕੁਇਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ, ਰਾਈਟ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਿਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਜ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਜ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਕਵਿਲੀਬਰੀਅਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਆਫਲੋਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਆਫਲੋਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬੈਗਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਫਿਊ PDRAs ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋਰਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਟੂਵਰਡਸ ਦਿਸ ਨਿਊ ਡੇ ਓਪਨ ਗੈਪ, ਰਾਈਟ। Secondly, these are few of my levels on MNQ। so मैं कोई financial advisor नहीं है, these are few of my levels that I have found from order flow, right। जिथों मैं देख रहा कि market reaction देवे, and you don't have to play on these levels, these are just my personal, right। same as on the NQ ਦੀ ਚੱਲਦੇ हैं। NQ ਤੇ मैं still ਚਾਹੁੰਦਾ कि market is gap ਨੂੰ fill ਕਰੇ, and we should sweep out this low, in order to go higher as well, right, because these are the buyers that made the market gone higher, and market V shape recovery करके नहीं जाएगी if it want to go higher, right। market कभी भी इतना नहीं करती।
ओके सो मार्केट ने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम तक अपनी पोजीशन बना दी हुई है, दैट इज above the equilibrium. Now the price is in the premium, right? So I am looking कि market कोई ना कोई bearish price action show करे and we can target this new day open, right? And secondly अगला week में market दे ਵਿੱਚ सिर्फ accumulation ही देख रहे हैं, क्योंकि market is in the यार market ਨੂੰ खुद नहीं पता where it is gonna go. It is in the यार indecision mode, right? Indecisive, I don't know what the spelling is. मार्केट आर इन द इंडिसिसिव मोड, उन्होंने खुद नहीं पता कितने जाना चाहती है, राइट? सो नैक्सट वीक मैं सिर्फ एक्यूमुलेशन देखना चाहना कि न्यू वीक जोड़ा वा वो इस वीक के अंदर ही क्लोज होए, इस पूरी पूरी एक्सपेंशन के मार्केट विच ही क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि देखो यार आ तो फिल होना ही होना है, राइट? न्यू वीक ओपनिंग अपनी इत्थे है, राइट? मार्केट इक्विलिब्रियम के उपर आ, तो तुसी की जानते हो कि न्यू वीक इत्थे ओपन होवे, लो लाए बिना मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, एंड जाके सीधा जाके दिस इज़ नॉट गोना हैपन, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग इनटू द मार्केट कि न्यू वीक ओपनिंग अपनी आ रही, राइट? न्यू वीक ओपनिंग इत्थे है, मार्केट ऊपर गई इक्विलिब्रियम के प्रीमियम्स, राइट? सो आई वॉन्ट कि मार्केट कुछ इदा का प्राइस एक्शन शो करे। न्यू वीक ओपनिंग इत्थे अपनी मार्केट ऊपर गई, थल्ले आके उन्हें यार न्यू डे ओपन न्यू वीक ओपनिंग का जोड़ा गैप आ उन्होंने टैप किया, ठीक है? उस तो बाद जी आ मार्केट इतों थल्ले डिगी आ। सो आई वॉन्ट कि न्यू वीक अपना इदा का कुछ बने, ओपनिंग जूडा स्विंग फॉर द वीक जोड़ा अज मार्केट बना रही है, एंड दैन क्लोज बिलो द जोन, और यू कैन से इन मार्केट इतने आके टैप कर दे, दैट इज़ द न्यू वीक ओपनिंग है। सो नैक्सट वीक मैं कुछ ज़्यादा देख नहीं रहा, वी स्टिल हैव न्यूज़ ऑन कैलेंडर, राइट? अपने को न्यूज़ हैगियां ने, बट ਜਦੋਂ तक मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई फैसला नहीं आ जाता टैरिफ्स ਦਾ, राइट, उदों तक मैं बाइंग ਦੇ ਵਿੱਚ जमा इंटरस्टेड नहीं हैगा, राइट? Fed Chair Powell speaking on Tuesday, that's a good thing. We can see volatility in the market, right? Monday ਨੂੰ अपने को कोई न्यूज़ नहीं है, right? Wednesday ਨੂੰ अपने को still Wednesday ਨੂੰ कोई न्यूज़ नहीं है। Thursday ਨੂੰ we have CPI, oh PPI अपने को Wednesday ਨੂੰ, that is tentative, so you don't know it's gonna come or not because we have government shutdown that is still going on, right? Unemployment claims, okay, that is also tentative, right? We just have one good thing in Friday ਨੂੰ ਤੇ ਜਮਾ ਨਾ trade ਕਰਿਓ, we don't have any news, not a single news we don't have, right? We just have one good day in the week, that is Tuesday, right? ਜਿੱਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਲ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, and rest we don't have any news, right? We don't know कि market ਦੇ ਵਿੱਚ news ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੱਢਦੇ हैं because these are tentative, right? Because of the government shutdowns, right? So basically next week मैं कुछ ज़्यादा नहीं देख रहा कि ये तो मैं जमा नहीं देख रहा कि मार्केट इंटरनल टैप करके एक्सटर्नल चक दे। जे मार्केट ने इदा किया ब्रो, दैट सेलिंग इज़ जस्ट प्योर मैनिपुलेटिव। 8 ट्वीट तो बाद तो जमा श्योर हो गया कि दैट सेलिंग इज़ जस्ट, दैट पैनिक सेलिंग, दैट डंप इज़ जस्ट manipulation of the markets. I don't know why they are not filing any case against this guy, but still chalo koi gal nahi. So this is my weekly analysis for next week, and बाकी ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਸ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਟੈਂਪਲੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तो मार्केट कुछ इदा का डंप शो करती, राइट? सो टेम्पलेट वर्क्स गुड ऑन दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शंस, राइट? सो if you want to find the bias, right, use the templates, right? And next and rest up bias every day upload कर ही देने अपने Discord channel दे विच। So yeah, that's all, मिलते हैं next video, bye bye।